Hello friends, this is Rajul Suthar, Assistant Professor of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bard, Gandhinagar. Today we will discuss about the software quality assurance and management. So what do you mean by software quality assurance? So software quality assurance, it is simply a way of to assure the quality in the software. It is a set of activity which ensure the process or procedure as well as the standard suitable for the project and implemented correctly. So सॉफ्टवेयर क्वालिटी हम कैसे मेंटेन मतलब वाई रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखाती है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या है और कैसी होनी चाहिए. उसके रूल्स और उसकी टेक्निक इसमें कवर होती है, उसके स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं. कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करने जाओ तो या कोई भी सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर रहे हो तो कस्टमर को क्या चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्टली वर्किंग है कि नहीं वो पहले आप चेक करोगे. देन उसमें कोई मतलब कितना इफ़ेक्टिव है और कितना यूज़फुल है वो आप चेक करोगे. सो एक एश्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर एश्योरेंस. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस विच वर्क पैरेलल टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. वो एक वर्क ऐसा है कि जैसे आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो उसी टाइम आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस चेक कर रहे हो. लेकिन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर एक स्टेज में यूज़ होता है. वो चाहे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट से आप स्टार्ट करो तो कोई भी स्टेज पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस चेक की जाती है. मतलब कि स्टार्टिंग फेज़ में कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसी है. कस्टमर ऐसा तो नहीं सोच लेता कि बंदे को सब कुछ पता होगा और डायरेक्टली वो क्रिएट कर देगा. लेकिन कस्टमर की जो नीड्स है वो फुलफ़िल करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप से वो अप्लाई करते हैं. देन एनालिसिस या कोडिंग पार्ट हो उसमें भी आप अप्लाई कर क्वालिटी एश्योरेंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. देन टेस्टिंग की बात है तो टेस्टिंग में भी आप क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर है कि नहीं वो टेस्टिंग से भी आप चेक करो. सो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड दी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर so that the problem can be prevent before they can major issue. Software quality assurance is kind of the umbrella activity. We already discussed the umbrella activity in previous or chapter 1. So this is applied through the software process. Software quality assurance have some of the approach like it quality management approach. It use the formal technical review, multi-testing strategy, effective software technology. So let we discuss in this chapter one by one. Software quality assurance and management. The syllabus cover the 10% weightage. The topic cover in this video lecture like quality concept and software quality assurance, software review, formal and technical reviews, software reliability क्या है वो डिस्कस करेंगे. देन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ISO 9000. देन CMM लेवल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन 6 सिग्मा फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड SQA प्लान क्या है वो भी इसके अंदर कवर करेंगे. सो फर्स्ट देखते हैं कि सॉफ्टवेयर व्हाट इज़ क्वालिटी. क्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली हार्ड टू डिफाइन एंड इट इज़ सिंपली स्टेट fit for the use or purpose. It is all about the meeting the need and expectation of the customer with respect to the functionality, design, reliability, durability and price of the product. ये क्या कह रहा है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट रेडी करने जाओ तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप फोकस करो और क्वालिटी मेंटेन हो जाए. टोटली कस्टमर की जो नीड्स है, कस्टमर की एक्सेप्टेशन जो भी है वो आपको समझनी पड़ेगी. उसकी चाहे वो फंक्शनैलिटी हो, प्रोडक्ट की डिज़ाइन हो, रिलायबिलिटी हो, ड्यूरेबिलिटी हो और चाहे उसकी प्राइस हो. सो ईच एंड एवरी स्टेप रिक्वायर्ड
फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी। कस्टमर को वेल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तभी डिलीवर होगी जब कस्टमर की प्रॉपर नीड्स आप फुलफिल कर पाओगे। व्हाट इज एश्योरेंस? एश्योरेंस टेक्निक क्या है? एश्योरेंस इज नथिंग बट द पॉजिटिव डिक्लेरेशन ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस विच गिव द कॉन्फिडेंस। हम क्या प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को कि कॉन्फिडेंस। कस्टमर को आप बोलोगे कि ये जो प्रोडक्ट है 100% वर्क करेगी, इसमें कोई बग या एरर नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड द एश्योरेंस। सो it is the certainty of the product or the service which it will be work well. It provide the guaranteed that product will work without any problem as per acceptation or requirement. कस्टमर की जो भी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वर्क करनी चाहिए। सो वो गारंटी हम कैसे देते हैं? बाय यूजिंग द एश्योरेंस। दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंसेप्ट, देयर आर टू टाइप्स। First one implicit and second one explicit. So what do you mean by implicit? The software quality factor, two type factor that apply at the McCall quality factor. McCall quality factor means it identify the product is correct, reliability, usability, efficiency and maintainability, integrity, flexibility, testability, portability, reusability and interoperability. Then ISO 9126 quality factor. So two quality factors are useful for the software quality. So what do you mean by this quality factor? Why require this quality factor? This quality factor is identify the good product or it check the product is properly working or not. Then software quality assurance, the definition of SQA. SQA is the plan and systematic method for evaluation of the quality of software product. The standard processes and procedure, that is called the SQA. Specific quality assurance and quality control task. Effective software engineering practice. It cover also the control of all the software work product and change made to them. Procedure to ensure the compliance with the software development standard, measurement and reporting the mechanism. So each and every step required the software quality assurance. यूज़र एक्सपीरियंस टेस्टिंग, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यूज़र की जो स्टोरी है, यूज़र रिक्वायरमेंट, उसको फुलफ़िल करने के लिए उसको एश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं। देन फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, देन फंक्शनैलिटी चेक करते हैं प्रोडक्ट की। देन परफॉर्मेंस मीन्स स्पीड ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ प्रोडक्ट इज़ फास्टर। देन compatibility testing, test management, testing management also cover, and security testing. Product must be secure. What is the importance of SQA, software quality assurance? Why required? Software quality assurance start from the beginning of the project, फ्रॉम दी एनालिसिस फेज। मैंने अभी डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेज पे ये अप्लाई हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे स्टेज पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस अप्लाई हो रहा है। एसक्यूए चेक द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज वन द पाइवोटल एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। एसक्यूए डिटेक्ट ऑल द बग, वायरस एंड अदर फ्लो एंड एरर एज द टेकिंग केयर ऑफ द issue as soon as possible. SQA is responsible for giving us the best software application that we enjoy in our daily activity. So customer also need proper or perfect product, be it for the home entertainment or use at the work. Software application will not perform perfectly without software quality assurance. Each and every product required the testing as well as assurance about the quality. So अब अगर आप कोई ना कोई प्रोडक्ट घर पे ला रहे हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे वो
अप्लायंस, होम अप्लायंस हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो आपको तभी उसमें इंटरेस्ट रहता है और तभी आप सेटिस्फाइड होते हैं जब वो प्रॉपरली वर्क करती है. सो दैट इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. सॉफ्टवेयर की बाबत में हम देखें तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हुआ. Quality control and quality assurance are essential activity for any business and procedure product to be used by the other. Prior to the 20th century, the quality control was a responsibility of the very responsible task for the build any product. Software quality is one of the major thing to maintain any organization, to maintain by any organization or company. SQA activity. So which type of activity covered for software quality assurance? It prepare an SQA plan for a project. So how can we prepare the plan for SQA? The plan is developed as a part of the project planning and is reviewed by all the stakeholder. उसको रिव्यू कौन करता है? ऑल दी स्टेक होल्डर. फर्स्ट स्टेज में स्टेक होल्डर रिव्यू करता है. क्वालिटी एश्योरेंस एक्शन परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम एंड SQA group are governed by the plan. The plan identify the evaluation to be performed, audits, review to be conduct, standard that are applied for the project, procedure, error reporting, tracking, that's all are covered into the SQA plan. Also cover the feedback from the customer. Then second step, participate in the development of the project software process description. Means the software सेकंड स्टेप का मतलब क्या है? हमने फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया. सेकंड स्टेप मीन्स the software team select a process for the work to be performed. The software quality assurance group review the process description for a particular product with the organizational policy, internal software standard, externally imposed the standard for cover the software. So all things are discussed in whenever we participate in the development of the project software description. Then review the software engineering activity to verify compliance with the define the software process. What do you mean by review? The software quality assurance group identify, document and track the deviation from the process and verify the correction have been made. That is called the review. We require the review of product. Then also require the audit designate the software work product to verify the compliance with the defined part of the software process. So software quality assurance group review selected work of the product, like it identify, check the document, track the document and verify correction have been made, periodically generate the report as well as check the result and it allocate to the project manager. So that is called the audit. And ensure that the deviation in the software work and the work product are documented and handled according to the document procedure. Means project plan or process description, all the thing standard or software engineering work product that allocated or used to finally handle according to the document procedure. Then record any non-complaints item that are tracked. Means non-complaints item, some of the report are generated of non-compliance item and it give to the senior management team in the last step. So this is the software quality assurance activities. Then technique, it cover the
Some of the technique: creating an SQA management plan, setting the checkpoint, then apply the software engineering technique, executing the formal technical reviews, having the multi-testing strategy. So software quality assurance technique that cover the some of the important portion like data collection. What do you mean by data collection? In the data collection, statistical quality assurance implies the following step, like information about the software defect is collected and categorized. In first step, we collect the information about the defected software, means कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें एरर या बग जनरेट होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर आप उसका लिस्ट क्रिएट करो, उसकी कैटेगरीज क्रिएट करो. देन an attempt is made to trace each defect to its underlying cause, means non-conformance specification, design error, violation of standards, poor communication with the customer, that type of error generated, and generate the report of their error. Then using the some of the principle that cover the 80% of the defect can be traced to 20% of the all possible causes, isolated the 20%. So also cover in the SQA technique. A software engineering organization collect the information on the defects for the period of 1 year, 2 year, or periodically check. Some of the defects are uncovered as software is being developed. Other are encountered after the software have been released to its end user. Defects error are uncovered. All can be tracked to be one or more, like incomplete or erroneous specification, then error in data representation, error in design logic, incomplete testing, then error in programming language translation. So this type of error also cover for the data collection. Then software review. Software review means it cover the formal technical review. What do you mean by formal technical reviews? A formal technical review, FTR, is a software quality control activity performed by the software engineer and other means some of the teams also required. The objective of formal technical review are to uncover the error in function logic or implement for any representation of the software, to verify that the software under the review meets its requirement. We also conduct the meeting for the review, formal technical review. Then we required the software has been represented according to the predefined standard. Also check the predefined standards to achieve the software that is developed in the uniform manner. And last one, to make the project more manageable. So these are the formal technical review. The review, reporting and record keeping during the FTR, a reviewer record the each and every review and actively record all the issue and generate the report and give to the senior manager. There are summarized at the end of review meeting, and the review issue list is proposed in addition of the formal technical review. Summary report is generated. It also use some of the guideline for the review, like conducting the formal technical review must be established in advance, distributed to all the reviewers, agree upon some of the reviews. A review that is uncontrolled can often or not review. So identify the uncontrolled or not review separately.
review the product not proper, set the agenda and maintain the review, limit, check the limit, then speak problem area but does not attempt this to solve the every problem that cover in the review list. ऐसा भी हो सकता है कि डिस्कस हुआ हो मीटिंग में, ये प्रॉब्लम डिस्कस करना है, रिव्यू करना है, लेकिन उसको एक्चुअल में अटेम्प्ट नहीं किया गया. सो ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है. वी रिक्वायर्ड इन गाइडलाइन वी रिक्वायर द रिटन नोट्स एंड लिमिट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड प्रोवाइड द पर्टिकुलर review for the customer. So this is called the guideline. Then सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, GTU एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या है. सो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज़ डिफाइंड इन स्टैटिस्टिकल टर्म एज द probability of failure free operation of a computer program in specific environment for the specific time. So what do you mean by software reliability? Software reliability मतलब कि सॉफ्टवेयर कंटिन्यूस अवेलेबल होना चाहिए. उसमें सॉफ्टवेयर की जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रिमूव करने के बाद कस्टमर को प्रॉपरली सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली अवेलेबल, यानी कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हो तो चाहे वो स्टैटिक या डायनेमिक सॉफ्टवेयर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट क्रैश हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फेलियर फ्री ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड दी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी. देन टू मेजरमेंट ऑफ रिलायबिलिटी वी रिक्वायर दी सिंपल मेजरमेंट मीन टाइम बिटवीन फेलर, MTBF. So here the calculation formula for MTBF. MTBF is equal to MTTF plus MTTR. Means MTTF is a nothing but a mean time to failure and MTTR is a mean time to repair. Here both the MTBF formula is useful when many researchers agree at the MTBF is far more useful measure than the other quality related the software metrics, and end user is concerned with the failure, not with the total defects count, because each defect contained within the program does not have the same failure rate. The total defect count provide with the little indication of the reliability of the system. And alternative measurement of reliability is failure in time, a statistical measurement of how many failure a component will have cover 1 billion hours of the operation per the 1 billion. So also we can use the FIT. FIT is nothing but the failure in time. Why we required FIT? It is the alternative measurement of reliability, a statistical measure of how many failure of a component will have over 1 billion hour of the operation. Then software availability. Software available means probability that program is running as per requirement at given point of time. So how can we find the availability of software product? So here the equation is given MTTF upon MTTF plus MTTR into 100. So here we find the percentage of availability of the software product.